Hello student, today we will discuss the second chapter of history of class 7, and that is the kingdoms, regional kingdoms 1. We studied in the first chapter in the medieval period, you know, the early medieval period. It started from 8th century. The different rulers were trying to rule in the northern and the southern India, and among them, the north, the Rajputs, the Ghaznavids, the Goris, the Palas, and the Gurjars, Pratiharaj were powerful, and in the Deccan there were the Rashtrakutas and a few smaller kingdoms. The Pallavas and the Pandyas and the Cholas were the dominant powers in the south. तो आज हम जो पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन से राजा थे और डेक्कन जो ट्रैप है, डेक्कन प्लेटो का जो भाग है उसमें, यानी कि साउथ में कौन कौन से राजा थे। तो बच्चों, नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले वी विल सी अबाउट द द किंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। सो राजपूत्स, वी विल न्यू अबाउट द राजपूत्स। राजपूत्स वेयर very strong and powerful rulers. So first we have to know about something, the origin of Rajputs. Students, there is a not a different and the solid solid evidence about the origin of the Rajputs. The different historians are giving the different opinions about the origin of the Rajputs. Word Rajputs, we have to know that the word Rajput come from the संस्कृत वर्ड राजपुत्रा। यह किस शब्द से? संस्कृत के शब्द से राजपूत से आता है, विच मीन्स सन ऑफ द किंग. Historians we know that the different opinions regarding their origin. Some believe that they were descendants of the Central Asian tribes settled in India after Hun invasion. And the Rajputs, however, claim to be descendants of the Kshatriyas or warriors class of Vedic times. They claim that they were Suryavanshi, that is belonging to the sun family, or Chandravanshi, that is belonging to the moon family. Some Rajput clans also considered themselves to the part of the fire. उसमें से कुछ तो कहते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा के वंश है, कुछ कहते हैं सूर्यवंशी हैं, तो कुछ कहते हैं कि हम अग्नि के वंशी हैं. So they believed that they were born out of the sacrificial fire. And the Tomars, Chauhan, Solankis, Paramars, Garhwal, and Chandelas were some of the important Rajput clans that ruled during this period. So if you will be asked that name some of the Rajput clans who ruled during the early medieval period, तो आप क्या कहेंगे? Tomars, Chauhans, Solankis, Paramars, Garhwals and Chandelas were some of the important Rajput clans. Tomars of Delhi, उनका क्या शासन था? देखिए, तोमर्स था दिल्ली के. The Tomars rulers founded the city of Delhi in the 8th century, and later the Chauhans annexed their territories. चौहान्स में जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं वो पृथ्वीराज चौहान से हम जानेंगे. सो चौहान्स ऑफ राजपूत्स में था. द चौहान्स ऑल्सो नोन एज द चहामनास and ruled the region around Delhi and Ajmer. So the most powerful Chauhan's ruler was Prithviraj Chauhan. He defeated Muhammad Ghori in 1191. However, a year later, Ghori defeated and killed Prithviraj Chauhan due to some people who was the friend of पृथ्वीराज चौहान. कुछ उनके ही मित्रों ने, राजपूतों ने ही उन्हें धोखा दे करके कैसे हरवाया, हम इसको बाद में पढ़ेंगे. लेकिन देखिए सबसे पहले कि ये था क्या कि
सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलंकीज ऑफ गुजरात क्या थे। सोलंकीज ऑफ गुजरात, द सोलंकीज वेयर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात। गुजरात में किनका था? सोलंकीज का। उन्हें चालुक्य के नाम से भी हम जानते थे। एंड सिद्ध राजा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुजरात। गुजरात के सोलंकीज के परिवार से कौन थे? सिद्ध राजा। एंड द दिलवारा टेम्पल्स एट द माउंट आबू and the sun temple at Modhera, Gujarat, were built by the Solankis ruler. So this is the giving temple of Solankis. ध्यान रखिएगा कौन कौन है? माउंट आबू and in Modhera, Gujarat, were built by Solankis. And Paramars of Malwas. तो भोज Parmara was a powerful ruler. Bhoja, his capital was Dhar. The Nilkantheswar temple at the Udaipur was built by the Paramars. Nilkantheswar temple. And now the Garhwals of Kannauj. The Kannauj is a very powerful dynasty. Yes, Kannauj was a city on that time where Garhwals were the rulers. The Garhwals ruled the region around Kannauj. The Garhwals king Jayachandra was defeated by Muhammad Ghori in 1194. We will discuss later on in 1191 how Prithviraj Chauhan defeated Ghori, and 1192 how Prithviraj Chauhan was defeated by Ghori. हम पढ़ेंगे आपको जस्टिस के बाद कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। वो शब्द वेदी बाण चलाते थे, हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना पहले जाने कौन कौन से राजा क्या थे। तो अब है चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंदेल क्या थे? द चंडेलाज वेयर द रूलर्स ऑफ द लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर्स। सो खजुराहो वाज द कैपिटल ऑफ द चंडेलाज rulers. It has many beautiful temples built by the Chandelas. Kritivarman was the most powerful ruler of the dynasties. And Ghaznavis from 1000 onwards, many invaders entered India across the mountain pass in the north west. Mahmud, the ruler of Ghaznis, led the first series of invasion. So Mahmud of Ghazni एंड देन गोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कैसे नॉर्दर्न राजपूत रूलर्स को वो धोखा से कैसे आ रहा है। तो बच्चों हमने क्या जाना? सबसे पहले नॉर्दर्न में सबसे पावरफुल कौन थे? राजपूत वेयर पावरफुल। एंड राजपूत में जो मुख्य थे टोमर्स थे, चौहान्स थे, सोलंकीज थे, परामार्स थे, गढ़वालीज थे, चंडेलाज थे। ये जो इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैंस थे। उसमें आपको तोमर्स दिल्ली के, चौहान्स राजस्थान के, सोलंकीज गुजरात के, परामार्स ऑफ मालवा के, एंड गढ़वालीज ऑफ कन्नौज के, चंडेलास बुंदेलखंड, एंड द गजनवीज। सो नाउ वी विल डिस्कस महमूद ऑफ गजनीज एंड गोरीज, who are the very cruel, we can say the cruel rulers in India, most cruel we can say. So we will discuss about the Ghoris and Muhammad Ghori in our next video. You see this video and like this video. Thank you very much.